Let us start with today's session on multivariable linear regression, in which we would be discussing the following part as such. आज के लिए इसमें we'll discuss and define what this multivariable linear regression is. We'll move on to build some mathematics behind जो भी concept हम use कर रहे होंगे, ठीक है? Then we'll see what this normal form is. Normal form is just to calculate your coefficients, your slope, different slope जो हमने देखा था, जैसे linear regression में we want to calculate the coefficient and we want to calculate that intercept, right? दो चीज हम लोग calculate कर रहे थे, M और C, है ना? कर रहे थे, तो मैंने वहां पे बताया था we want only those values, हमें वही values चाहिए M और C के जिसके corresponding loss is the minimum. So we'll see what this normal form is. Then we'll discuss computational complexity of multivariable linear regression. And then हमेशा की तरह we'll सीधे we'll go to this implementation part. ठीक है? So should we start with today's session? Just give me a thumbs up if you are ready with your notebook and all. Because आज के session में भी we would need notebook. If you are ready, give me a thumbs up. यश आदि आ रहा है, notebook नहीं लाई थी? चल कोई बात. Let us start with today's session on multivariable linear regression. Let me set up my just tell me if it is visible or not. Just a second. Give me a moment. Just tell me if it is visible or not. If it is visible, give me a thumbs up. Visible है सबको? शशांक, यश? हाँ. अभी हम लोग मतलब रिग्रेशन कर रहे हैं, इसका तो हम लोग सुपरवाइज्ड कर रहे हैं अभी. सी सुपरवाइज लर्निंग में जैसे मैंने बताया, सुपरवाइज लर्निंग का भी दो डिवीजन होता है. एक होता है रिग्रेशन, एक होता है क्लासिफिकेशन. हम रिग्रेशन पार्ट में सबसे पहला कल कंप्लीट किए थे, जो था सिंपल लीनियर रिग्रेशन, जिसमें सिर्फ एक एक्स था और उसके करस्पॉन्डिंग वाई था, राइट? इसके बाद इसके बाद वील हेड ऑन आज, जिसमें वील डिस्कस what this multivariable regression is. आज हम इसको देखेंगे, ठीक है? we'll see this part आज. इसको मेरे को बोल्ड कर देना दो. we'll discuss this thing multiple linear regression आज. इसके बाद एक चीज हम और देखेंगे, ग्रेडियंट डिसेंट. उस पे भी मैं आऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. देन we'll move on to classification, ठीक है? हाँ वंशिका बोलो. भैया जो आपने डायबिटीज वाला बताया कि डायबिटीज है कि नहीं, उसके लिए लीनियर रिग्रेशन यूज होगा. तुम मेरे को बताओ, हाउ वुड यू बी एबल टू प्रेडिक्ट कि कैसे है? सी, डायबिटीज होगा या नहीं होगा, इट इज इधर ट्रू और फॉल्स, राइट? यस. तो इट इज इधर, अगर बुलियन वैल्यू में देखूं तो इट इज इधर 0 और इट इज इधर 1. 0 अगर नहीं है, 1 अगर है. लेकिन इफ यू वुड यूज लीनियर रिग्रेशन तो वैल्यू तो कहीं 0-1 के बीच कहीं भी आ सकता है. वेट करो, इसी के लिए हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे आते हैं, मैं बताऊंगा क्या होता है, ठीक है? इसके लिए हम नहीं यूज कर सकते इफ यू हैव टू प्रेडिक्ट डायबिटीज है या नहीं, वी कैन नॉट यूज लीनियर रिग्रेशन बिकॉज बाय डेफिनेशन a regression problem means you have to deal with a continuous set of number, right? you have to deal with it, जो यहाँ पे possible नहीं है, ठीक है? so see, let us start. let us start with linear regression आज. so see, linear regression can be of multiple types. One was the simple linear regression जो हमने कल देखा था. कल जो हमने देखा था जिसमें क्या था,
एक x था और एक y था, राइट? एक प्रेडिक्टर था और एक एक्चुअल आउटपुट था, राइट? अनदर वन जो आज हम आज देखेंगे दैट इज multivariable linear regression, जहां पे हमारे पास x1 x2 there would be some set of predictors and we would be having only one output. Then there is one more thing which is known as polynomial regression. Polynomial linear regression, जहां पे होता क्या है कि इंडिविजुअली हर एक लाइक x1 है, x2 है, x3 है, y है, तो हो सकता है कि इंडिविजुअल एलिमेंट, जैसे यहाँ पे यू वुड सी यू हैव दिस x1 x2 x3, दीज आर योर प्रेडिक्टर्स, राइट? इसके करस्पॉन्डिंग वो कुछ पॉलिनोमियल टर्म है, जैसे एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक्स क्यूब हो सकता है, बट वी विल मैप इट इन अ लीनियर फंक्शन। हाँ वंशिका बोलो। भैया आपकी स्क्रीन नहीं प्रेजेंट हो रही है। आदि, आर्या, मेरा स्क्रीन विजिबल है? जस्ट टेल मी। हाँ प्रेजेंट है। वंशिका एक बार तुम मीटिंग लीव करके वापस से ज्वाइन करो, ठीक है? मैं नोटबुक दिख रहा है, नोटबुक। नोटबुक दिख रहा है ना, बस दैट इज द होल थिंग। नोटबुक दिखना चाहिए, ठीक है? नोटबुक दिखना चाहिए। वंशिका दिख रहा है? हाँ भैया। चल ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो हमने कल ये वाला पोर्शन, लास्ट क्लास में ये वाला पोर्शन देखा था, सिंपल लीनियर रिग्रेशन, ठीक? जहाँ पे तुम्हारे पास मैं एक सिंपल सा एक डेटा सेट दिया था। वो डेटा सेट में क्या था? वो डेटा सेट में था एक CGPA और देयर वाज योर LPA, राइट? ये चीज था। यहाँ पे एक प्रेडिक्टर है और एक एक्चुअल आउटपुट है, राइट? सो हम ऐसे कह सकते थे कि योर LPA इज समहाउ m, दैट इज योर स्लोप, इनटू योर CGPA प्लस सम कोएफिशिएंट, ऐसे था। ये लीनियर एक फंक्शन हम बना सकते हैं, राइट? ऐसे था, ठीक है? आज हम क्या देखेंगे? आज we'll डाइव थोड़ा सा डीप। what would happen, let us say फॉर एग्जाम्पल कल हमारा इंडिया पाकिस्तान का मैच था, राइट? ठीक है, कल हमारा इंडिया पाकिस्तान का मैच था। तो द क्वेश्चन अराइज, व्हाट वुड हैपन, ऑब्वियसली इंडिया जीत गया, सबको मजा आया, इफ देयर आर मल्टीपल प्रेडिक्टर्स। माय क्वेश्चन इज, जैसे अगर इंडिया और पाकिस्तान का कल मैच था तो उसमें बहुत सारा फैक्टर्स है जिसके बेसिस पे तुम लेट्स से किसी ओवर में कितना रन बनाया है उस टीम ने वो प्रेडिक्ट कर सकती हो, राइट? बहुत सारा फैक्टर्स है। let us say for example we can have something as your average, we can have your strike rate, we can have your rain percent, rain हुआ है या नहीं, we can have your humidity, wind, fall of wicket and your run। और भी सब फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है? प्लेइंग स्क्वाड, हाँ कौन सा बंदा बैटिंग पे आया है, यू कैन हैव समथिंग लाइक दैट, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। So if I have to predict this run, see in this is my output, this is my output, ठीक है? This thing is my output। अब all of these thing, ये जो इतना पूरा फैक्टर्स है, these are all my predictors, these are all my predictors, ठीक है? ठीक है, आया समझ में इतना पार्ट? आया? So let us say in general if I'm talking about something as let us have this x1 x2 x3 x4, चलो x4 तक ही लेते हैं, let us take this y। if this is your data set, these would be your predictors, right? This will be your output। so can I formulate some kind of a linear expression for this? Can I have? Yes, I could be writing something as y is equals to m1 x1 plus
m2 x2 plus m3 x3 plus m4 x4 and plus your constant term, this is your intercept. ठीक है? Can I write like this? Can I write like this? Just give me a thumbs up, something जिससे मैं समझ. Can I write it like this? So remember, अगर मेरे पास ये अगर हम इस कंसेप्ट पे ध्यान दें, तो अगर मेरे को लीनियर रिग्रेशन परफॉर्म करना है तो आई नीड दीज वैल्यूज, राइट? एम हमको पता होना चाहिए और सी पता होना चाहिए, राइट? हमारा एम रहता था कि हमको एम और सी हम पता लगाएं, ये हमें मिल जाएगा तो वी कैन परफॉर्म लीनियर रिग्रेशन. ठीक है? जस्ट गिव मी अ थम्स अप इफ आई एम सेइंग करेक्ट और नॉट. हमको वहां पे एम और सी चाहिए था, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो आई वुड नीड दिस एम. अगर हम यहाँ पे बात करें तो आई वुड नीड दिस, ओके, m1 m2 m3 m4. आवर एम वुड बी हेयर. इतना दिक्कत होता है यार. आवर एम वुड बी टू फाइंड योर m1 m2 डॉट 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 mn जितना तक डेटा सेट है एंड c. हमारा एम यही होगा, फाइंड करना. जस्ट टेल मी यस एंड नो. एक चीज और, एक और चीज, एक चीज और, एक चीज और. ठीक है? Let us say if we are talking about a simple linear regression. In simple linear regression हमारा लाइन क्या होता था? y is equals to mx plus c, or we can say it like y is equals to beta naught plus beta 1 x. ठीक है? ऐसे हम लिख सकते थे, लिख सकते हैं, where beta naught is your coefficient and beta 1 is your slope. Beta naught is your intercept and your beta 1 is your m. आदित्य, तुम जो कोई बुक देखोगे, जो भी बुक मैंने रिसोर्सेज में दिए हैं, या तो ये नोटेशन होगा या फिर थीटा नॉट थीटा वन हुआ होगा, बट मोर लेस. ठीक है? सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट टू डिमेंशनल, if I'm talking about two dimensions, our aim was, let us say these are your, okay, just let us say these are your points. These are your points. ठीक है? These are your points. तो हमारा एम क्या होता था? कैन यू टेल मी? आवर एम वाज टू गेट सम काइंड ऑफ line, right? Our aim was to get some kind of line which best fits this database, a data set, right? हम यही चाहते थे, हमारा एम यही होता था. If we are talking about two dimension, I want this line y is equals to mx plus c. This is your x, this is your y. यही होता था. हमको इस लाइन का इक्वेशन चाहिए. I want this line. So if I'm talking about for example, let us say 3, अभी के लिए हम 3 dimension का बात करते हैं. So in multivariable linear regression, if I'm talking about 3 predictors, x1, x2, x3, no, this is a 4 dimension, x1, x2, and let us say 1. So we have 1, 2 and 3 dimensions, right? We have 1, 2 and 3 dimension अभी के लिए. ठीक है? अभी मैं तुमको कुछ समझाने के लिए आई एम जस्ट टेकिंग 3 dimension, which अब यू कैन एक्चुअली जस्ट फॉर्मुलेट दिस होल थिंग टू जितना डायमेंशन का तुम्हारा डेटा सेट है. ठीक है? सो इफ आई हैव टू प्लॉट दिस थिंग, so I would need some equation. Yes, equation says, okay, let us say, you can say beta naught plus beta 1 x1 plus beta 2 x2. This is your equation. अब just मेरे को give me a kind of analogy. अगर 2 dimension है तो I'm getting this line. If I'm talking about 2 dimension, I'm having this line. अगर 3 dimension में बात करेंगे तो what would I be getting? Can you tell me? अगर 3 dimension में अगर हम बात करेंगे, let us say 3 dimension, this is your x1, this is your x2. Curve is essentially a 2 dimensional thing.
Parabola, Vanshika, parabola is also a two-dimensional figure. Talk about three-dimensional something. Talk about three-dimensional something. Let us say these are your data sets. Okay. Essentially, what we need is we need some kind of plane. We need some kind of plane here, right? जैसे 2D में it was a line, 3D में उसका formalism क्या होता है? A plane, right? अब ये plane से our aim would be to find this equation of this plane. So this is that equation. This is your equation of plane. ठीक है? अब our aim, जैसे हम linear regression में क्या करते थे, if you see here, our aim was to reduce this distance. ये जितना error आ रहा है, our aim was to minimize it, right? हमने ये देखा था, our aim was to minimize it. Similarly, यहाँ पे भी we have to do the same. Our aim is to minimize this distance. Plane से जितना ऊपर नीचे distance बन रहा है error का, see if I show you this figure. Look at here. Just a second, guys. Delete this thing. पता नहीं ये visible है या नहीं. Just अब मैं इसको zoom करता हूँ. See? Just a second. Okay. So यहाँ पे देख रहे हो, there is an axis x2. There's this axis x1. These are the red dots are your different. The red dots are your different data points. अब इस data point के corresponding there is this plane. There is this plane. ये देख रहा है? ये blue color, blue or greenish type का जो है. There is this plane. अब from this plane, obviously हर एक point तो उस plane पे lie करेगा नहीं. और हम चाहते भी नहीं है कि हर एक पॉइंट उसमें लाई करे, बिकॉज देयर इज दिस कंसेप्ट ऑफ ओवरफिटिंग एंड अंडरफिटिंग. हम आगे डील करेंगे क्या होता है. सो एसेंशियली आवर एम इज टू गेट दिस प्लेन. ठीक है, इस प्लेन को हमको इफ यू आर टॉकिंग अबाउट 3D यू वुड हैव अ प्लेन. अगर तुम 3 डायमेंशन के ऊपर जाओगे देयर इज समथिंग व्हिच इज नोन एज हाइपर प्लेन. यू कैन सर्च मोर अबाउट इट लाइक in 4D and above. We need our aim is to find hyperplane. ठीक है, हमारा एम ये होता है. 3D में बात करेंगे तो we simply need this plane. ठीक है, so let us do what? Let us have some mathematical intuition. More or less, I assume कि multivariable linear regression होता क्या है, थोड़ा आइडिया मिला. हमारा एम क्या होता है इसमें, एवरीथिंग राइट मिला. perfect. So see, let us say what let us have this data set something like x1 x2 x3 dot xm. ठीक है, and we have this y. ठीक है, so I have something this, because हम जो भी अभी डील करेंगे it would be based on matrices. ठीक है, and let us say there are n columns. There are ये पूरा, if let us talk about only the predictors. So there are m predictors, right? M predictors है, and let us say there are n rows. So I can say there are n rows and there are m columns.
So if I want to get, just for the sake, वन टू, अगर हमको यहाँ पे जाना है तो इसका, अगर इफ यू रिकॉल मेट्रिसेस, तो इसका लोकेशन क्या होगा? इफ यू कुड रिकॉल मेट्रिसेस, इसका लोकेशन क्या होगा? ठीक है, लेट अस सी किस रो में है ये। सो इसका हो जाएगा फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम, राइट? तो कैन आई हैव समथिंग लाइक दिस? अगर लेट्स से ए इज द मैट्रिक्स, सो दिस पॉइंट वुड बी A1, 3। ऐसे ही होता था मैट्रिक्स में। अगर एक मैट्रिक्स ऐसे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 3 × 3 मैट्रिक्स को आई कैन राइट इट लाइक दिस: A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ऐसे लिख सकते हैं ना? अच्छा ठीक है। So what I'm saying is, let me erase this thing। ऐसा कुछ उतना काम नहीं है, ठीक है। ये बस तुमको बताने के लिए था कि हम जो आगे मैथमेटिक्स यूज करेंगे, तो अगर कोई ऐसा है यहाँ पे जिसको ये फॉर्मलिज्म ध्यान में नहीं है, तो ठीक है, छोड़ो, इसको बाद में। So can I say for some m predictors, what my y would be? My y would be something as beta naught plus beta 1 x1 plus beta 2 x2 plus something as beta n x m. Can I write it like this? Just tell me. Can I write it like this? अब see here, in this whole thing, this is your offset. This is known as your offset or your intercept. Because intercept क्या बोल रहा है कि if everything here, ये जितना जीरो हो जाए, इधर का सारा अगर वैल्यू जीरो हो जाए, तब भी what would be my y value? यही होता है इंटरसेप्ट। Intercept is what? Whenever your x is 0, so what y value should be corresponding to x is equals to 0? ठीक है, this is what offset, your intercept is, right? Intercept क्या होता है? x अगर 0 है तो उससे corresponding जो y value आ रही है, that is your intercept। ठीक है, so this is your equation। अब can you tell me in this equation what your aim is? Your aim is to find this value beta naught, beta 1, beta 2, beta n। This is what you have to find, because एक बार मेरे को ये मिल गया तो I can make an equation। ये equation I can make this equation, and if I will make this equation, I'll get the corresponding y value। Can I write like this? अच्छा, अब एक बार और एक चीज और सुनो, यहाँ पे just tell me कि we have these values beta naught, beta 1, beta 2, beta n something। What would, अगर ऐसे सोचो, अगर बीटा 2 का वैल्यू बहुत ज्यादा है बाकी सब टर्म से, तो कैन बी से कि x2 जो एक प्रेडिक्टर है, उसका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है y को प्रेडिक्ट करने में। व्हाट आई एम सेइंग, अगर b2 का वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ा कर दे 1000, 10,000, और बाकी सब वैल्यू 10, 20 के रेंज में है, तो वी कैन से कि ये x2 जो फैक्टर है, इसका बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है प्रिडिक्ट करने में y2। कैन आई से लाइक दिस? एकदम नॉर्मली एकदम सोचो ना। और अगर लेट्स से दिस b1 इज देयर, b1 का वैल्यू बहुत बड़ा कर दे, तो वी कैन से कि इन ऑर्डर टू प्रेडिक्ट y2, b1 का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, और वी कैन से y इज वेरी हाईली कोरिलेटेड टू x1। ठीक है, सो इफ अगर तुम किसी बुक्स में देखोगे तो दीज आर ऑल्सो नोट्स, कहीं पे इसको कोएफिशिएंट्स बोला जाता है, कहीं पे इसको डिसीजंस बोला जाता है, कहीं पे इसको वेट्स बोला जाता है। if you would read some books, you will either use coefficient or weights। anyways, चलो अभी देखो। अब just tell me, let
y hat be the matrix of predicted values. ठीक है, y hat predicted value का होगा. What I mean, let us say I have this y hat. So this y hat would be something like this: y1 hat, y2 hat, yn hat. ऐसा होगा कुछ. बिकॉज सी, अगर ऐसा कुछ डेटा सेट है, इफ यू सी लाइक दिस, अलग अलग डेटा सेट के लिए आई कैन प्रिडिक्ट y1, y2, y3, ऐसा समथिंग लाइक दैट. आई कैन, व्हाट आई मीन, y1 hat, y2 hat, समथिंग लाइक दिस. हो सकता है ना? जस्ट टेल मी. आदि, शशांक, कनिष्का, यश, शाश्वत, नंदिनी, ऐसे ही हो सकता है अलग अलग वैल्यू. बिकॉज सी, अल्टीमेटली इन डेटा सेट यू वुड बी हैविंग बहुत सारा y वैल्यूज, बहुत सारा वैल्यू तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो. इन जनरल यू कैन प्रिडिक्ट एवरी वैल्यूज जितना उस डेटा सेट में. अगर वो डेटा सेट में 100 वैल्यूज है तो यू कैन प्रिडिक्ट फॉर 100 वैल्यूज. एसेंशियली दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. सो can I write it like this? For this first value, I would be having something as simple as b beta naught b1x. Let us say for beta m, and this goes as your x. Something like beta naught plus beta 1x plus mx. अब just tell me one thing. ऐसे कैन आई राइट? आई एम जस्ट डूइंग व्हाट, एक मैट्रिक्स मैंने रख दिया कि अगर मेरे को पहला वैल्यू चाहिए तो पहला वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग है, दूसरा वैल्यू के करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू है, तीसरे करस्पॉन्डिंग की वैल्यू ये है. सिंपल. ठीक है. अब जस्ट टेल मी वन थिंग. if I have to find this first value, just a second, if I have to find this first value, what I need, I'll need I'll need this thing, this thing. पहले के लिए ये चाहिए होगा, दूसरे के लिए हमको ये पूरा रो चाहिए होगा, तीसरे के लिए ये तीसरा रो पूरा चाहिए होगा. ठीक है. सो कैन आई राइट इट लाइक दिस? अच्छा रुको, लेट मी मेक इट अ बिट. Can I write it like this? Beta naught plus beta 1 x first row first column plus beta 2 first row second column, and so on. If you go to the last row, you will get beta, and see, since there are m predictors, it will go till m. And what would be the location of the last x value? It would be like x first row and m column. यही होगा. If you go for second one, beta 1 x second row first column till your last thing, beta m x 2m. And if you take it for nth row, what you'll get? See, you get beta naught beta 1 x nth row first column plus लास्ट में जाओगे तो बीटा m x nth row m column. ठीक है, लिख सकते हैं ऐसे. Can I write it like this? x1 hat, sorry, y2 hat dot 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 yn hat. This is essentially your this matrix. अब if you have understood मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, थोड़ा सा भी अगर तुमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ा होगा, सो दिस होल थिंग, ये जितना मैंने इंडिविजुअल प्रोसेस किया है, आई कैन डिकम्पोज दिस होल मैट्रिक्स इनटू अ प्रोडक्ट मैट्रिक्स of something like, I can have it in something like 1 x11 x12 x1 m 2 x21 x22 x2m, and if you will take it till n
ठीक है, sorry, this will not be 1, this is always 1 because see essentially तुम्हारा first term is always a beta naught, ठीक है, x n1 x n2 x n n, and if you multiply this matrix with this column matrix, you'll get the above result. अगर तुमको matrix multiplication पता है थोड़ा सा भी, तो I'll take the first value, I'll multiply by this, I'll put it here. I'll take second value, multiply by this, add here. I'll take the third value, I'll get the third value here, I'll add it. ऐसे करते हैं matrix multiplication, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं, बस इस फॉर्मेट को मैंने प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स में मैंने तोड़ दिया, ठीक है. तो कैन आई राइट समथिंग लाइक दिस, दिस इज एसेंशियली योर y hat, right? So can I write your y hat as, let us take this whole thing as x, let us take this whole thing as x, and let us take this as beta. Okay. So this is essentially by far the most important equation you would need for today's session. Okay, this is by far the most important equation you would need. Up, let's see what all things we have here. So in this equation, this x is known as your decision matrix. And this is known as your coefficient matrix. Okay. अच्छा, let us try to find out the order. See, इसमें if let us talk about this matrix. In this matrix, there are n rows. जितने डेटा सेट होंगे उतने रोज होंगे. If there are n, मैंने पहले बताया, if there are n rows, so I can write n here multiplied by, let us see what is the number of columns. So यहां से लेके यहां तक there are m columns and there is one more column. So can I say इसका order हो जाएगा n into m plus 1. This is the order of your decision matrix. अच्छा, let us talk about this. कितने इसमें columns होंगे, जितने तुम्हारे rows होंगे, तो this is your n into 1. This is the order of your coefficient matrix, right? Okay, one more thing. इस y का ऑर्डर क्या होगा? y सिंपली है जितने तुम्हारे रोज होंगे, दिस इज ऑल्सो n into 1, n times n cross 1, sorry, not 1, multiply by 1. This is the order, ठीक है? So this is known as the matrix form equation of your multivariable regression. संजय, एक बार थोड़ा ऑर्डर रिपीट कर दो. अच्छा, अच्छा सी, पहला ये कोएफिशिएंट, ये डिसीजन मैट्रिक्स देखो. इस डिसीजन मैट्रिक्स में जितने रोज होंगे उतने वैल्यूज यहाँ पे होंगे, ठीक है? तो मेरा रोज अगर मेरे पास अगर तुम्हारे पास n डेटा है, ठीक है, तो देयर शुड बी n रोज, ठीक. अब यहाँ देखो, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ कॉलम्स, यहां से यहां देयर वाज m कॉलम्स, 1 2 3 till m. अब एक ये 1 वाला एक्स्ट्रा मैंने ऐड किया यहाँ पे, तो देयर इज m plus 1 कॉलम्स. ये इसके लिए अब इसके लिए सिंपल क्या, 1 2 3 4, जितना m, जितना तुम्हारे पास डेटा सेट है उतना ये हो जाएगा, ठीक है? तो दिस इज योर मैट्रिक्स इक्वेशन, ठीक है? ओके, लेट अस डाइव थोड़ा सा और डेप्थ में. अब लाइक लास्ट सेशन में मैंने तुम लोगों को एक चीज बताई थी. लेट अस से लेट y be the same thing, y1 y2 dot 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 yn. So this is what, this is your actual values, इसको तुमने एक मैट्रिक्स में रख दिया, ठीक है? हमने कुछ प्रेडिक्ट किया और हमने हमारे कुछ एक्चुअल वैल्यू जो हमको पता है. सो कैन आई से माय एरर इज सिंपली actual minus predicted? I can write error is what? Actual minus predicted. So if I'm talking in terms of matrix, can I say my matrix is y minus y hat? What I said, देखो, if this whole thing
is your set of actual values. This is the जो हमको actual value मेरे पास डेटा सेट में हमको पता है, what I did, उसको एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया, ठीक है. एंड आई हैव दिस y hat here, जिसको हमने प्रेडिक्ट करके रखा हुआ है. इफ यू सी here y hat, I have the set of all values जो हमने प्रेडिक्ट करके रखा हुआ है. तो my error is simply this thing. कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं. This is very easy, very simple. This is the error, ठीक है. So if I'm talking in terms of matrix, can I write it like this, something as y1, y2, y3 dot dot yn, ठीक है, माइनस, okay, just a second, टेढ़ा लिखा रहा है, y1 hat, y2 hat dot 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 yn hat. Can I write something like this? Can I write? ये मैट्रिक्स ये रहा, ये मैट्रिक्स ये रहा. So essentially this is what I'm having, something as y1 minus y1 hat, y2 minus y2 hat. So if I take it till n, yn minus yn hat. This is your error, ठीक है. This is your error. So if I'm talking about something, अगर तुमको लास्ट सेशन में लॉस फंक्शन देखा तो लॉस फंक्शन वाज योर मीन स्क्वायर्ड एरर, MSE. If I'm only talking about your squared error, so my squared error is something as, okay, this is, let us say this is my error. What I have to do, y minus y hat, इसका स्क्वायर करेंगे and I'll get this for all the value जितना मेरे डेटा सेट में है. I'll do this, ठीक है. मैंने क्या किया, एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड का जो डिफरेंस आ रहा है उसका स्क्वायर किया मैंने, स्क्वायर किया, ठीक है, और जितने वैल्यूज हैं सबके लिए करस्पॉन्डिंग निकाल दिया. जस्ट अ सेकेंड, ये हट नहीं सकता है क्या? एक चीज मैंने मिस कर दिया, y x. So here your yi is your actual value. This is your actual value and this yi hat is your predicted value, ठीक है. हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन में यही देखा. हाँ, अब अगर तुम उसका मीन ले लोगे तो तुम उसको 1/m से डिवाइड कर दोगे और 1/n से डिवाइड कर दोगे, राइट. सिंपल यही था, ठीक है. if I'm talking about your multiple linear regression, see what I'm saying, in multiple linear regression your error, whatever error you are getting here, see, is same as this. It is same as this, ठीक है. But one way to approach this thing, just tell me, can I have something as like this? Just tell me y1 minus y1 hat, sorry, into y1. अगर को स्क्वायर लिखना है, can I write it like this? To y2 minus y2 hat and I'll do it till nth term. जितना n तक आएगा तो I can write it like yn minus yn hat into yn minus yn hat. Can I write it like this? अगर तुम फिर से इस चीज को, if you would try to decompose this whole thing in matrix form, you will have something as like this, y1 minus y1 hat, y2 minus y2 hat, and you can have till yn minus yn hat. And what you have to do, you have to multiply this whole thing with a column vector. This is your row vector or your row matrix, simply row vector bolo, matrix bolo, simply. This would be the row
and y1 minus y1 hat, y2 minus y2 hat until yn minus yn hat. अगर तुम इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द अबव रिजल्ट. अब यहाँ पे एक चीज और देखो, दिस इज योर रो मैट्रिक्स और दिस इज द कॉलम मैट्रिक्स और दोनों में एलिमेंट सेम है. ठीक है, दोनों में एलिमेंट्स सेम है, राइट. सो कैन आई से इफ आई, देखो अब ये भी देखो, दिस होल थिंग इज दिस मैट्रिक्स. This thing is here. है ऐसा? This is your error matrix. ये है ना सेम चीज जो हमने यहाँ लिखा था, है ना? Just give me a thumbs up or no. Vanshika says yes. Tanishka says yes. Arya, Priyanshu, Adi, Sashank. Yeah. अब can I say your error is, if this is your error matrix, तो ये चीज जो है इधर, ये इसका ट्रांसपोज है. ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स आई अज्यूम कि तुम लोग को आता होगा. ये चीज जो है इसी का तो ये ट्रांसपोज है. ट्रांसपोज इज व्हाट? रो को उठा के कॉलम बना दो, कॉलम को उठा के रो बना दो, समथिंग लाइक दैट, है ना? यही किया है मैंने. कनिष्का आई अज्यूम कि आ रहा होगा तुमको थोड़ा समझ में. तुम कोई भी बुक में जाके खोलोगे, तुमको सीधे सिर्फ ये इक्वेशन दे देगा, कहां से आया है, कैसे ये मैथमेटिकली निकला. यू हैव टू डाइव इनटू द मैथमेटिक्स, जो मैंने थोड़ा सा यहाँ से डिस्कस किया. सो कैन आई राइट दिस थिंग एज y, sorry, let us take it for y only, y minus y hat का ट्रांसपोज into y minus y hat. This is essentially your error. ठीक है, this is essentially your error. ठीक है, so I guess ये तो पता ही होगा सबको. If you have something as a plus b, इसका ट्रांसपोज लोगे तो it is as a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, यही होता है. और अगर ए बी है, इसका ये अगर दो मैट्रिक्स प्रोडक्ट फॉर्म में इसका ट्रांसपोज लोगे, दिस इज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज. ये दो प्रॉपर्टीज आती ही होगी आई गेस. चलो ये चीज हम यहाँ अप्लाई करते हैं थोड़ा सा. ठीक है, चलो इसको यहाँ पे थोड़ा अप्लाई करते हैं. Okay. To see what I'm saying, I have this error function as something as y minus y hat का ट्रांसपोज into y minus y hat. Let us use the property. So I have this y transpose minus y hat का ट्रांसपोज and I have y minus y hat. ठीक है, अब let us simply do the mathematics, थोड़ा mathematics let us deal, right. अब एक चीज और देखो यहाँ पे, just check here what this y hat is. Y hat is your x beta. Just tell me x beta है, give me a thumbs up. ठीक है. So let us put this value here. हम वो वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे. ठीक है, so what I'm saying is simply I have this yt minus x beta का ट्रांसपोज, I have this y x beta. ठीक है, हमने अभी ऊपर में देखा कि this y hat is your x beta. ठीक है, I have this thing. चलो आते हैं थोड़ा नीचे. अब इफ यू वुड मल्टीप्लाई दिस थिंग, अगर तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट समथिंग एज वाई टी वाई माइनस वाई टी एक्स बीटा माइनस एक्स बीटा का ट्रांसपोज वाई माइनस एक्स बीटा का ट्रांसपोज एक्स
बीटा, यू विल गेट दिस। ठीक है, सिंपल मैंने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, सिंपल मैंने मल्टीप्लाई किया है। अब इफ यू वुड, अगर तुम थोड़ा सा ध्यान में देखोगे तो दिस, बोथ ऑफ देम आर इक्वल, एसेंशियली बोथ ऑफ देम आर इक्वल। ये दोनों जो टर्म है, ये दोनों से जो मैट्रिक्स जनरेट होगा मेरे पास, बोथ बोथ वुड बी इक्वल। कैसे होगा? चलो थोड़ा सा देख लेते हैं, मैं इस पे ज्यादा डेप्थ में नहीं आऊंगा, बट ठीक है। सो वी हैव दीज बोथ टर्म, आई हैव दिस वाई टी एक्स बी, आई हैव टू प्रूव दिस कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है या नहीं, ठीक है, आई हैव टू ओनली प्रूव दिस। सो लेट अस से यहाँ पे इफ यू सी, इफ यू लाइक टू ड्रॉ, भैया एक बार ये फिर से एक्सप्लेन कर दो। अच्छा देखो मैंने क्या किया, ये मैट्रिक्स आया मेरे पास, मैंने यहाँ पे y हैट का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, एक्स बी जो हमने ऊपर देखा था, यहाँ पे हमने देखा, मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया और सिंपली मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये वैल्यू इसके साथ, जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आई विल गेट दिस वैल्यू। ठीक है, मेरे को ये वैल्यू आ गया। अब देखो, अगर अगर तुम कोई भी बुक में देखोगे, कहीं भी तुम अगर पढ़ोगे थोड़ा सा भी, तो सिंपली बोल देंगे कि दीज टू वैल्यूज आर इक्वल। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा वो तुम लोग एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये इक्वल कैसे है, मैं वो पार्ट डिस्कस कर। अगर मैं भी सिंपल बोल रहा, चलो ये दोनों पार्ट इक्वल है, तो सेम चीज अगर दो बार सब्ट्रैक्ट हो तो आई कैन सिंपली राइट वाई टी वाई माइनस टू वाई टी एक्स बी, सिंपल, दिस इज द रिजल्ट वी आर गेटिंग। बट मैं थोड़ा सा इजी करने के लिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे ये इक्वल है। ठीक है, सो लेट अस से कि दिस, लेट अस से कि अब हम थोड़ा सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। लेट अस से कि आई वुड लाइक टू रिप्रेजेंट माय y विद दिस वेरिएबल a एंड माय a से मैं y को रिप्रेजेंट कर रहा हूं और xb को b से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो कैन आई राइट इट लाइक दिस, कैन आई राइट इट लाइक दिस, y ट्रांसपोज इज योर a ट्रांसपोज, xb इज योर b, should be equal to your b transpose a। हमारा एम यही है, दिस इज आवर एम टू प्रूव, राइट। अब उतना बड़ा टर्म कौन लिखने जा रहा है, मैं सिंपल कंजूसी किया। let us take this value a transpose b, ठीक है, I have this value, ठीक है। अब let us do what, let us say this is equal to c, so what would be the c transpose, a transpose b का transpose, so I would be having something as b transpose a transpose का transpose, transpose का transpose वापस से वही होता है, I would be having something as b transpose a, I got this value, ठीक है। सो एसेंशियली ये दोनों से अगर मैं अज्यूम करूं, कैन आई रिफ्लेक्ट योर c is equals to c transpose, can I write it, your c is equals to c transpose, I got this thing। बेसिक 12th का मैथमेटिक्स है यार, ट्रांसपोज का a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दोगे दैट इज इक्वल टू a, सिंपल, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। सो अगर तुम इसमें, अगर अब इफ your c was a transpose b and your a transpose b का transpose, this was your b transpose a, c को, अब now a was your y, तो y transpose b was what, your xb, and b was your xb का transpose and your a was y। क्या यही सेम चीज यहां पे लिखा हुआ है, जस्ट सी, लिखा हुआ है ना, एसेंशियली ये दोनों चीज इक्वल हो गया। अब दोनों बार ये दो, अब सेम चीज को दो बार सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो दो बार सब्ट्रैक्ट हो गया। तो कैन आई राइट इट लाइक दिस, कैन आई राइट इट लाइक दिस, कि what you are doing essentially is, you're subtracting it two times, you're subtracting it two times। तो can I write it like this, e is equals to simply y transpose y minus 2 y transpose x b plus beta transpose x transpose x beta, this was your
एरर थे। अब तुम ये देख सकते हो यहाँ पे, ये जो चीज है यहाँ पे, इसको मैंने ओपन कर दिया, इन दोनों को क्लब कर दिया, दोनों सेम है, अब जो चीज जैसे वैसे ही रख दिया, ठीक है। आई कैन राइट इट लाइक दिस। सो अब जस्ट टेल मी, हमारा एम होता है टू गेट द मिनिमम वैल्यू। माई एम इज टू गेट, माई एम इज, आवर एम इज, जैसे हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में भी हमारा एम था लॉस फंक्शन को मिनिमाइज करना, तो आवर एम इज टू गेट मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस ई। अब मिनिमम वैल्यू कैसे मिलती है? आई गेस 12th में तुमने मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा होगा। तो आवर एम इज टू मिनिमाइज दिस ई, आवर एम इज टू डिफरेंशिएट दिस ई विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग, राइट। हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे। अच्छा पहले चलो सिंपली हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो कैन यू टेल मी कि इसमें कौन सा ऐसा वैल्यू है जिसपे ये फंक्शन ई डिपेंड कर रहा है? कोई ऐसा वैल्यू है इंडिपेंडेंट वैल्यू जिसपे ये चीज डिपेंड कर रहा हो? एक्स, अरे एक्स इज समथिंग जो तुम्हारा प्री डिफाइंड, उसको तुम चेंज नहीं कर सकती हो। यू कैन ओनली चेंज बीटा हेयर। बीटा इज कोएफिशिएंट जो तुम कैलकुलेट कर रही हो। y is something you know, x is something you are given, y हाँ, so there is only beta which, so let's try to get, if you try to differentiate this thing, यहाँ पे तो बीटा का कोई टर्म है नहीं, तो this would simply get 0। यहाँ पे एक बीटा है तो this would be -2y ट्रांसपोज x, ठीक है। अब ये जो यहाँ प्रॉपर्टी है, इसको अगर तुम थोड़ा सा मैथमेटिक्स देखोगे, तो if you have something as y is equals to a transpose x a, if you have something like this, and if you want to differentiate it with respect to a, you will get something as 2x a transpose. This is the property, ठीक है। ये प्रॉपर्टी तुम देख सकते हो, मैट्रिक्स डिफरेंशिएशन का है। तो if I would implement it here on this matrix, if I would implement on this matrix, can I get something as 2? Then what is your x? X is your this thing, x transpose x, this is your thing. Ab what is this a transpose? A transpose is your beta, so this is what you get as your differentiation। x जो यहां पे मैंने लिखा है, मैंने ये पूरा चीज को x मान लिया है, this whole thing is your a, let us say a है। तो ये क्या है? ये okay, no, this is not, this whole thing is your x and this is your a। so if you would use this property, you will get this value। अब if I have to minimize it, can I say in order to minimize it, I have to equate this thing equal to 0, ठीक है। can I write it like this? Just tell me yes or no। अरे डिफरेंशिएशन पढ़े हो ना तुम लोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट करते थे, आई हैव टू पुट इट इक्वल टू 0 so can I get the critical values। if I would substitute this whole thing as 0, you would have something as 2y transpose x minus plus 2x transpose x beta transpose equals to 0, ठीक है। अब एक काम करो, इसको इधर ले जाओ, you will get 2x transpose x beta transpose is equals to 2y transpose x, 2 से 2 कट गया, you will get x transpose x beta transpose equals to y transpose x। ये आया सबका? अब I only want beta here, तो मैं इसको इधर भेजू, I can have beta transpose as y transpose x into y में x ट्रांसपोज x। हो सकता है, जस्ट टेल मी, हो सकता है ना। अब सी, एसेंशियली दीज आर मैट्रिसेस, ये सब मैट्रिक्स है, तो कैन आई राइट y ट्रांसपोज x डॉट इनवर्स
और इनवर्स हो रहा है ना ये एक्चुअली, कैन आई राइट एज x ट्रांसपोज x का इनवर्स। ठीक है, मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने आता है ना, लाइक ट्वेल्थ में पढ़े हो ना सब कोई। ओके, अब यहां देखो, आई हैव दिस बीटा यानी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स और इसका ट्रांसपोज। आई डोंट वांट ट्रांसपोज, हमको ट्रांसपोज नहीं कर चाहिए, हमको सिर्फ बीटा से मतलब है। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, इस पूरे चीज का ट्रांसपोज ले लेते हैं दोनों साइड से। I'll get something as beta, and this can be essentially your y transpose x into x transpose x इनवर्स और इसका ट्रांसपोज। अगर तुम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे, बिकॉज उतना टाइम है नहीं कि मैं एक एक सिंप्लीफिकेशन बैठ के करूं, तो यू विल गेट समथिंग एज बीटा इज इक्वल्स टू x ट्रांसपोज x का इनवर्स x ट्रांसपोज y। We'll get this thing. We'll get this thing. This is known as your closed form solution or ordinary least square method, or this equation is known as normal form. हमको अगर बीटा चाहिए, हम बस ये मैट्रिक्स कैलकुलेट कर लेंगे। सी दीज आर डॉट, तो मैट्रिक्स के टर्म में बात करें, दिस इज डॉट प्रोडक्ट, दीज आर डॉट। I'll calculate this xtx matrix. I'll take this its inverse. I'll multiply it with x transpose and multiply it with y transpose. So I'll get my values of beta. जो बीटा का वैल्यू आया है, I'll put it in that equation. I'll get my x there. मेरे को पूरा वो इक्वेशन बन गया, उससे करस्पॉन्डिंग मेरे को y वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, कैन आई, सो मोरलेस ये क्लियर हो गया राइट। अब इफ यू वुड वर्क विथ numpy, तुम इस चीज को सिंपली numpy में देयर इज दिस फंक्शन इनवर्स x dot t dot x dot x dot t dot y ऐसे करके यू विल राइट इट, यू विल गेट दिस मैट्रिक्स बीटा। अब जो तुमको वैल्यू चाहिए वहां से, जैसे एक टू मैट्रिक्स इज व्हाट 2D एरे, अब 2D एरे में जैसे वैल्यू फेच करते हो, यू कैन फेच इट आउट लाइक दैट। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट दिस थिंग। ये इतना खराब इरेजर क्यों काम कर रहा है यार, दिस इज, ये जरा सा चल। तो दिस वाज द मैथमेटिकल इंट्यूशन, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। सो अब आते हैं, एक चीज डिस्कस करते हैं कि हम ये मेथड क्यों नहीं यूज करते। विल डिस्कस व्हाई डोंट वी यूज दिस मेथड, व्हाई डोंट वी यूज दिस मेथड। अब जरा बताओ इसमें को, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ कंप्यूटर, कंप्यूटर को इसमें क्या क्या कैलकुलेट करना होगा। आई मीन कंप्यूटर, कंप्यूटर को सबसे पहले एक्स टी कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, कंप्यूटर को फिर एक्स टी डॉट एक्स कैलकुलेट करना होगा, फिर इसका ट्रांसपोज लेना होगा, इनवर्स लेना होगा, एंड समथिंग लाइक दैट। तो पता है, जो सबसे बड़ा दिक्कत है वो ये टर्म है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है वंशिका, ये टर्म है, ये टर्म है। क्यों है मैं बताता हूं, क्यों है मैं बताता हूं। Is somewhere around order of n cube. If n is your data number of data set, cubic time, what I mean, see what I mean, he, for all those who are not knowing this notation, let us say time taken, and I have number of inputs. So जैसे हम डेटा सेट बड़ा करेंगे,
my computation will take a cubic time. एक क्यूब का ग्राफ ऐसे ही होता है ना, एक क्यूब का ग्राफ ऐसे ही होता है. लेट अस इग्नोर द नेगेटिव पार्ट बिकॉज नेगेटिव में डेटा सेट नहीं हो सकता. सो बहुत कम वैल्यूज के लिए बहुत ज्यादा टाइम लेना शुरू कर देगा. फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई से, let us have a matrix of 100 cross 100. This is a matrix, 100 values. And अब if कोई बात नहीं, if you have to calculate कितना टाइम लगेगा, तो it would be somewhere of the order 100 का क्यूब this is the order. इतना टाइम लगेगा. एग्जैक्ट यूनिट नहीं होता है कभी भी इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का, बट मोर लेस आई अज्यूम कि ये समझ में आ रहा है कि दिस प्रोसेस इज नॉट एट ऑल optimized. Like, just a second, if I'll show you this thing. Just a second, मैं ये तुम लोग को दिखाऊं. Computational complexity I'm talking about. Computational complexity of, ठीक है, एक विकिपीडिया पे था. Just do what? Let us see. इसमें है या नहीं, इसमें नहीं होगा तो कोई बात नहीं है. कोई बात नहीं. जस्ट अ सेकंड, मैं तुमको बुक से दिखाता हूँ. गिव मी अ सेकंड, लेट मी ओपन दैट. The source book. Uh, okay, I got this. Introduction to Machine Learning using scikit-learn. कहाँ गया scikit-learn वाला? सी इसमें है या नहीं? इसमें है. ओके, जस्ट अ सेकंड, इसमें नहीं है, दूसरे वाले में होगा. एक्सकैलिड्रॉ का लिंक शेयर करना. आदि अभी के लिए तो एक्सकैलिड्रॉ पे हम वर्क नहीं कर रहे हैं, बट ठीक है, मैं कर दूंगा. अरे ये वाला जो नोटपैड है इसको आज भेज दो हाँ कैलकुलेशन. यार, ये भेज दूंगा मैं, डोंट वरी. बस देख रहा हूँ इसमें है या नहीं. इसमें एक पेज पे था, मैं वो, चलो ठीक है, मैं बाद में देख लूंगा. भी नहीं टाइम वेस्ट करते हैं इस पे. बट मोर लेस ये अज्यूम समझ में आ गया कि बहुत उसका, इफ यू विल टॉक अबाउट दैट ओनली, क्यूबिक ऑर्डर पे जा रहा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. तो किसी भी हालत में दैट इनवर्स ऑपरेशन, अभी सिर्फ 100 का बात कर, रियल वर्ल्ड डेटा सेट में मिलियंस ऑफ डेटा होता है, उसका क्यूब लो, अब उस ऑर्डर में जा रहा है तुम्हारा टाइम. सो दैट इज नॉट एट ऑल ऑप्टिमाइज्ड. भाई उतना क्यों करने जाएंगे हम लोग? लाइक, तो खुद सोचो, तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम लेके आएगा एंड यू आर टेकिंग सो मच टाइम. व्हाई वुड समबडी सिट विथ यू एंड गिव यू दैट प्रॉब्लम टू सॉल्व, राइट? चलो, जब मिलेगा तो मैं भेज दूंगा, अभी मेरे पास सामने नहीं है यहाँ पे. Where was I? So you see the time complexity of this inverse operation is of order, let's say, n cube. This is not optimized. So I can say this method is good for very small data. 10-20 data है तो चलो ठीक है, चल सकता है. But if you're talking about real world data set जहाँ पे बहुत heavy data होता है, बहुत ज़्यादा data होता है, this method is not good. So in sklearn, if you're talking about sklearn जो होता है, linear regression को जो हमने library देखा है, it solves it in two ways. One way is using ordinary least square method, and the second way is using gradient
ठीक है, it is using gradient. We'll see what gradient descent is. ठीक है, we'll see what this gradient descent is. This is more of a mathematical way. This is more of a geometrical way. This is more of a geometrical way. But more or less, I assume कि this was clear. So should we move on to implementation? ये मैं तुम लोग को भेज दूंगा, no issues. I'll send this to you. But let us switch and let us solve some problems. ठीक है? Let us solve some problems. So before that, let me give you this data set. Let me give you this data set. Or if you would like to see कैसे मैं यहाँ पे आया, you can always go to sklearn. You can always go to this thing, sklearn dataset. See, you have this sklearn dataset. ठीक है, अब यहाँ पे if I have to find, देखो जैसे ये देखो California housing dataset, this is for regression. I can perform regression here. Let us say we have something as digits. The digits are for classification. Diabetes, this is for regression. So we'll have this California housing data set. Okay, let me open my Google Colab. Google Colab. Kindly open your Google Colab. Let's have a new notebook. And I'll just a second. Okay, let me name it as multivariable regression. मैं एक बार शेयर कर देता हूँ. Just tell me if this is visible or not. Visible है? Visible है? Give me a thumbs up if it is visible or not. So I want to get this data set, right? To get this data set, you have to use this command. See in the documentation it is. From sklearn fetch California housing. And use this. Let us import all the necessary libraries from sklearn.dataset. अब इसके अलावा भी I need some more data set like import pandas as PD. I'll have something as let us say import by, हाँ देखो इतना सब आ ही गया मेरे लिए. matplotlib as plt. स्क्रीन नहीं दिख रही है शायद। संजय का स्क्रीन विजिबल नहीं है my mistake. visible है? My mistake. So इतना हमने import कर लिया. ठीक है, इतना हमने import कर लिया. ठीक है, let us run this thing. We have imported all the libraries we want. अगर एरर आएगा तो इसके कारण आएगा, अदरवाइज इसका दूसरा तरीका भी है. कोई बात नहीं. अच्छा, okay, I have this. Okay. From sklearn.dataset, let's do what? Let us do this thing. Let us say import fetch California housing dataset. Okay, done. So यहाँ पे we have imported all the necessary libraries. We have hashtag import libraries. हमने जो भी libraries था we have. Now let us do what? Let us load data. अब how do I load data here? Do we have any kind of example? Yes, we have some example here. If you would see in the documentation, in order to get the data, I have to use this function, fetch California housing. असी हाँ देखो यहाँ पे है ना, यहीं से मैंने यूज किया वहाँ पे import. If you would read the documentation, you will get क्या हो रहा है. See, fetch California housing. ठीक है? So ठीक है, let us see. I'll use the same command here in my tab. What I'm saying, I'll load my data. I'll load data. Let us say I have this variable housing. Okay, I got this. So my data set, what happened? Okay.
what happened? Oh, what is happening here is forbidden. Acha, let me type it out. Fetch underscore California housing. क्या issue आ रहा है? Yes, my data set is loaded. ठीक है? Let us do what? Let us have something as इसको as frame कर देते हैं. Frame. Let us put this thing in frame. Just put it in. Let's have data as housing HOU housing dot frame. Mistake. Let's run this thing. Function has no attribute. Okay. As underscore frame. Yeah, as frame क्या है तो you can read out the documentation. अच्छा ये नहीं लेगा. चलो कोई बात नहीं. ये नहीं ले रहा. कोई issue. No issues. So I have this data set, right? हमारे सामने यहाँ पे data set है. एक तरीका और है. You can actually go to this site. Let me show this. Share this thing. Kaggle. You can go to Kaggle. You can go to this data set. You can have this California housing price. You have this data set. You have this CSV file. You may download it. Okay, I don't want it like this. ठीक है, थोड़ा सा नीचे आओ. KV, no. Get this. CSV file. Please download this thing. Okay, you can download it. Till then, let me do what? Let me actually give you this data set. Should I give it to you? हाँ Should I? ठीक है, मैं भेज दे रहा हूँ. Check करो. I have sent it in the WhatsApp group. You can go here and have that thing. Stop. Housing.csv. I'll get this value. Let it load. तुम लोग भी लोड कर लो. स्क्रीन विजिबल नहीं है. इसमें विजिबिलिटी का इशू कहाँ से आ रहा है यार? ये सिंपली तुमको व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने भेजा है, वहां से सिर्फ जैसे लोडिंग करते हैं वैसे लोड कर लो. You can have something as import. अच्छा ठीक है, अभी क्लिप्स दे दो. Let us see this housing value. Let us see this housing value. See this housing. Just tell me if it is visible or not. इसका documentation क्या है? Just tell me if it is visible or not. See documentation. So there is this command, features name. I'll get this thing. Function. ये ऐसे हो क्यों रहा है? Just a second. Which California housing? Okay, यहाँ पे ये मिस कर दिया मैंने. Error in handling. अच्छा एक मिनट दो. Just a second. If I have something as something like this, फिर तो रन कर जाना चाहिए इसको. Say my values as housing, fetch California housing, and इसमें attributes क्या क्या है? Just a second, मैं बता दूं तुम लोग को. As frame,
yes as frame. See, अगर तुम यहाँ देखोगे, there is this thing, there is this attribute as frame. अगर true है, the data should be in the data frame. ठीक है, that whatever data you have, you will be getting it in the form of data frame. So I'll use this thing, and you have this, whatever value you should be having, it should be boolean. अगर ये इस पे वर्क नहीं करेगा तो I'll go to just a second, let me do it in my insiders. VS Code insider, let me do it here only. से होना तो नहीं चाहिए, बट क्योंकि ऐसा हो रहा है तो हम इसको डील करेंगे. तुम लोग का हुआ, ये लोड हुआ था? जस्ट टेल मी. लोड फाइल हुआ? लोड हो गई. तुम लोग का लोड हो गया? फाइल नहीं यार, फाइल नहीं. एक सेकंड, एक सेकंड. देयर इज दिस एरर. चलो कोई बात, कोई बात नहीं. ये तेज बनेगा तो हम भी तेज बन जाते हैं. पांडा को कर लिया ना, चलो ठीक है. My data set housing is equals to pd dot read underscore csv. This I'll get this data. Copy path. Yes, the data set is here. So let us see किस data set में. स्क्रीन ओके, अच्छा हाँ सॉरी. सो मैंने सिंपली रीड कर लिया. ठीक है, लेट अस सी कि इसमें क्या क्या है. So in this data set, I have some attributes like longitude, latitude, house, median age, total room, total bedroom, population, household, median income, median house value, ocean proximity. ठीक है, these are the various values we have. ठीक है, ठीक है, ये attributes है. Let us see कि इसका shape क्या है. Let us see इसका shape क्या है. 20,640 डेटा हैं corresponding to 10 rows. Okay, so ये हो गया. अब I want to see कि क्या क्या मेरा, रुको, हाउसिंग HOUSI हाउसिंग डॉट हेड. लेट अस सी कि हम क्या क्या चीज पे ऑपरेट करना चाहते हैं. Okay, so if this is your data set, see, can I say कि these should be my data set? Just tell me. जो हमारा x की तरह काम करेगा. Can I say like this? What I said, कि ये जितना वैल्यू है, sorry, median house value, median income, all these values should be my x, and what my y should be, my y should be this thing. Acha, let us say data is equals to df dot drop, and let us drop this thing, ocean proximity. हमको इसका काम नहीं है. ओ, df नहीं, क्या नाम है, हाउसिंग, सॉरी. और लेट अस ड्रॉ, हाँ चलो इतना ही रखते हैं. Can I drop this thing? Error आज. अच्छा रुको, अभी ऐसे रुको. Let's see. Your access should be 1.
from your let's see your data dot head because हमको ये लास्ट कॉलम का काम नहीं है राइट नाउ आई डोंट हैव दिस थिंग हमको ओशन के पास है नहीं है अभी के लिए लेटेस्ट इग्नोर तो आई हैव दिस डेटा सेट अब कैन आई से कि ये जितना वैल्यू है दीज आर माई एक्स एंड दिस इज माई वाई आई वॉन्ट टू गेट कि हाउस का वैल्यू कितना है ठीक है तो लेट अस डू व्हाट लेट अस से माई एक्स वैल्यू इज सिंपली योर डेटा डॉट आई लॉक अब लेट अस सी इस आई लॉक में हमको कहाँ से कहाँ जाना है हम व्हाट आई सेड कि आई वॉन्ट टू गेट ऑल दीज रोज जितना रो है मेरे को सब रो चाहिए तो फॉर ऑल दी रो आई हैव दिस थिंग सारे रो में इटरेट करो एंड व्हाट आई सेड हमको ये लास्ट कॉलम को छोड़ के बाकी सब वैल्यूज चाहिए ये लास्ट कॉलम को छोड़ के बाकी सब वैल्यूज मेरे को चाहिए I'll iterate for everything and I'll skip this -1. Let us do for y. iLock theta is equals to iLock. And for this, you also need all these columns. You also need okay, so wait, you don't need all these columns, you just need this column, right? You just need this column. ये हमारा y है so I'll simply do what I'll simply write this comma -1. This is my x and y. ठीक है अब what we'll do हमने जो देखा we'll split the data set. We'll split the data set. तो if you have to split your data set, मैंने कुछ बताया था तुम लोग को. If you have to split your data set, user guide. एक डाउट था ये हाँ. iLog फंक्शन क्या करता था मैं भूल रहा हूँ. If you have to fetch through row or column, you can go through this. अच्छा रुको. Let me do what? I want to train, test, split. I want to get this thing. Still learn. ठीक है. I got this. Let us import something. कुछ import करना होगा. sklearn.model. I have to import this thing. Right? I have to import. And let's do what? Let's import this thing here. Share this tab. And let us do what? Let us split your data. Split data set. How do I split it? First, I need in my data library something like from क्या था यहाँ से sklearn. Okay, I have इसको भी ignore कर. This is something you will get it from there. Test and split जो हमने last बार देखा था we'll do it. Let's split your data set. So how do I split? I want some x values for training and testing. I need some y values for training and testing. Let us say my x underscore train, my x underscore test, my y underscore train, my y underscore test. It should be equal to, if you would see here, if I show you this tab, can you see there is this method? Text, test, train, split. This is the function. इसके अंदर you put your variables, test size and random state. ठीक है? Let us go here. Let us see. I'll have something as test underscore train split. और ये general convention होता है कि we want to train it with 80% of data and we want to test it with 20% of data. एक normal convention. 80% training data, 20% test data. I want my test size as 0.2. Let's train this thing. This happened. Test. Oh. Train. What this happened? अच्छा हाँ ये तो मैंने किया ही नहीं था. Now let's run this.
So my data set is split. If I want to get some x underscore train, if you want to see some values, y underscore train, you will get something as c. You have some श्रिंजय सेम एरर मेरे में भी आ रहा है, तुमने क्या सही किया? अरे यहाँ ऊपर लाइब्रेरी मैंने इंपोर्ट किया तो उसको रन भी तो करना है एक बार, इसको रन करो ओके देखो. ओके समझ गया. So this is how your data set is split. चलो अब हमने डेटा सेट को स्प्लिट कर दिया. नाउ वी वांट टू क्रिएट अ मॉडल. आई से लेट्स क्रिएट अ मॉडल. लेट्स क्रिएट अ मॉडल. हमारा मॉडल क्या संजय होगा? ऊपर वाला कोड जरा चैट्स में भेज दो. अरे दिस इज, अरे वहीं से उठा लिया मैं डॉक्यूमेंटेशन से. ठीक है. अब वी वांट टू क्रिएट अ मॉडल. वी वांट टू क्रिएट अ लीनियर रिग्रेशन मॉडल. I want to create a linear regression model. So if I show you this tab, यहाँ पे तुम नीचे जाओगे, you will be having something as sklearn.linear model. आ गई तुम. ठीक है. You have this linear model. In this linear model, we want to discuss linear regression. ठीक है. What we'll do, we have to import this thing from sklearn. Import this thing. Control C. We go here. Put really. Simply run this thing. अब हम रेडी है मॉडल बनाने के लिए. इफ यू वांट टू क्रिएट अ मॉडल, जस्ट सी हियर, हमको आई वांट समथिंग एज अ फंक्शन एज लीनियर रिग्रेशन. ठीक है. ये लीनियर रिग्रेशन का हमको फंक्शन चाहिए. ठीक है. we'll do what, we'll simply, just a second, simply have some variable in which we'll put that. So let us say model is equals to linear regression. This is the model. Up in this model we want to fit something. What I say, model dot fit, and what do I want to fit? I want to fit x for my training values and y for my training values. I'll simply do this, x train and y train. ठीक है. हमने क्या किया कि लीनियर रिग्रेशन मॉडल में we have fit this data set and let us run this thing. Now you are ready. And now let's do what? Let us make some predictions. So what I said, you have this thing, and now let's predict for some values. So I said my y underscore predicted, let us say something as model dot predict. This is the function here. If you will go here to the documentation, you will get this thing. Okay, see, if you see here, you have this predict function, you have this fit function, you have this predict function जहाँ पे तुम x का value देते हैं, you will get the values. ठीक है. So we'll use this model dot predict, and what do we want to predict on? We want to predict on some test values. X underscore test. Regression does not have anything as something like this. Just a second. Model dot predict. क्या हो रहा है? X contain nan. Input X contain nan. Okay. Let us predict for some values. Let's test. संजय ऊपर वाले कोड के लिए मेरे पास एरर आ रहा है, नेम लीनियर रिग्रेशन इज नॉट डिफाइंड. तुमने फिर यहाँ पे जब ये इंपोर्ट किया होगा, तुमने फिर इसको रन नहीं किया होगा. सी, तुम्हारा मॉडल तभी एग्जीक्यूट होगा जब वो रन नहीं करे. रन जब करोगे तभी वो मॉडल तुम्हारे नोटबुक में आएगा. अच्छा, लेट अस गेट दिस एक्स टेस्ट पहले. Yeah, this values. Do I have some nan values? Okay, let us see. ये x. Okay.
Can I have something as y underscore predict as okay, just get something y predict. Let us print this thing. So you see, you have these different values here. Okay. Let us do what? यहाँ पे let us get some training data. ठीक है? Let us do what? Let us say I want some x train, comma y underscore train. Perfect. Perfect. So you see, for this first x value, these are different attributes. यहाँ से लेके यहाँ तक is your x, and this is your. So for first y, you have this. This is the house, and you are getting somewhere around इतना. थोड़ा सा error है. Yes, there are some errors. For some, like second one, you have 38. You have this value. For example, next 172, you are getting 26. So हाँ, थोड़ा you are having that error. अब तुम्हारा error हो सकता है कि थोड़ा error हो सकता है तुम्हारा change हो, because randomly इसने shuffle किया है. मेरे में जिस randomness के साथ shuffle किया है, तुम्हारे में हो सकता है नहीं किया हो. But more or less, I assume कि you got what I mean. ठीक है? You can have something as uh, if you want some coefficient. So you have this model score. Let's see. This is your score. Okay. You can have something as coefficient. These are your different coefficients. जैसे beta naught, beta 1, beta 2, beta 3, beta 4 ऐसा. If you want to access something, like हमको पहला कोएफिशिएंट चाहिए क्योंकि ये array है, तो पहला I want to get the first value, I'll get my first value. ठीक है? This was your coefficient. Can I have the intercept? Yes, you can have the intercept. Oh, I have my intercept. So now I have my coefficient. Now I have my intercept. I can now make that equation and I can predict for values, right? Can I do it? Can I do it now? Let us plot. Let us plot. Let us plot first. बहुत हुआ ये सब. Let us plot. So let us say plt dot scatter. And what do I want to plot? I want to plot y test. I want to plot y test. I want to plot some. I want to predict it with. चलो ये रखते हैं. इसमें दिया है, and I want to predict it on label. Label is equals to predicted. Label should be predicted. I want to do it like this. Label should be predicted. ठीक है, and I want to get the line with plt dot plot. चलो ठीक है. ठीक है, let's plt dot show. वो कर सकते हो. Okay, let us have the grid also. plt dot grid. plt dot grid, and I want true here. I don't want my legend अभी legend को ignore करते हैं, because legend हमारा आएगा grid के ऊपर, because जब हम सारा labels रख देंगे तब I want to calculate my legend. And let us show this thing, plt dot show. अभी भी error आ रहा है इसमें. क्या error है? क्या error आ रहा है? x and y value must be of same size. अच्छा, okay.
See, you are having something as a histogram like this. Let me this thing x dot test x dot. See, there is अब ये तो I'm talking about actual versus predicted. If you have to do it for 3D, like बहुत सारे यहाँ पे n dimensional plane, तो you have to make some kind of hyperplane. So उस hyperplane को if you want to get, you can have something this thing. You can learn about this thing known as Plotly. Plotly. Let me show it. Python graphing library. You can learn about this thing. You can make some kind of 3D plane or n-dimensional hyperplane to plot the values. So more or less, I assume ki you got what multivariable regression is. You calculated the values, right? You calculated the values. Okay, you calculated the values using, see कितना ज़्यादा यहाँ पे predictors है, longitude, latitude, housing, rooms, bedrooms, population and so on. इतने सारे predictors को use करके we have found some values, घर का median price. ठीक है, अब there are some errors. ठीक है, there are some errors, but more or less I assume this was correct because in linear regression the best part is there are various ways to minimize some errors. बहुत सारा तरीका होता है जिससे we can minimize the error. ठीक है, but I assume that this part was clear. ठीक है, was it clear? संजय एक बार बोला कोड दिखाओ जहाँ पे तुमने सारी लाइब्रेरीज इंपोर्ट करी। अरे ये मैं भेज दूंगा, अभी मैं ये भेज दूंगा क्योंकि मेरे में वही एरर आ रहा बार-बार। चलो कोई बात नहीं, मैं ये कोड भेज दूंगा, ठीक है। तो कैन आई अज्यूम कि आज का सेशन वाज क्लियर? You can also practice this thing on different data set. तुम अपने से डेटा सेट बनाओ, तुम आईपीएल का स्कोर प्रेडिक्ट कर सकते हो। हाँ देखो आदि, तुम्हारा क्लैरिटी इस पार्ट में नहीं होगा, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में। जो मैथमेटिकल पार्ट था वो क्लियर था, राइट? उसमें कोई लाइब्रेरी लोड नहीं होगा, इसलिए तुम बोलोगे क्लियर नहीं लग रहा है। बट हमने क्या किया है वो तुमको क्लियर होगा कि ठीक है, हमने पहले लाइब्रेरीज इंपोर्ट की, हमने डेटा को रीड कराया, हमने फिर क्या किया, जो हमको काम करनी था उस कॉलम को हटाया, फिर हमको क्या एक्स में चाहिए क्या वाई में चाहिए वो कर दिया, हमने फिर डेटा सेट को स्प्लिट कर दिया, देन हम नीचे आओ, हमने मॉडल बनाया, मॉडल में वो वैल्यू डाली और हमने प्रेडिक्शन किया, फिर हमने प्लॉट कर दिया। दिस इज व्हाट यू विल डू। You are different, see whatever values you are having it in a form of array, और इससे भी ज्यादा तुमको इंटरसेप्ट मिल गया, तुमको कोएफिशिएंट मिल गया, you can form that equation, ठीक है, you can make that equation and you will get all the values, ठीक है। So should we wind up today's session? मैं नोटबुक भेज दूंगा ये, ठीक है, I'll send you this notebook, और मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ कि उसमें मेरे से इसमें क्या एरर आ रहा था जो मैंने ऑनलाइन इंपोर्ट नहीं कर पा रहा था, मैं उसको देख लूंगा एक बार, ठीक है। अदरवाइज आई अज्यूम कि मोर लेस इट वाज क्लियर। मैथमेटिक्स समझना जा रहा है, इम्प्लीमेंटेशन में इधर दिक्कत हो रहा है ना, जो एरर आ रहा है तुम उसको कॉपी करो, स्टैक ओवरफ्लो पे जाके देख लो, कोड भी हाँ आदि भेज। तो शुड बी वाइंड अप टुडे सेशन, सो लेट अस मीट डे आफ्टर टुमारो, वी विल स्टार्ट विद ग्रेडियंट डिसेंट, ठीक है। हम एक दिन पीछे चल रहे हैं, आज का सेशन वाज कल होना चाहिए था, बट मैं कल थोड़ा तबीयत ठीक भी नहीं था और कल आईपीएल का मैच भी था, तो आई अज्यूम कि थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं। सो मोर लेस आई अज्यूम कि इट वाज क्लियर आज का सेशन जो मैथमेटिक्स। इस वीक क्लासेस एक स्किप करके होगी कि लगातार होगी? देखो शशांक, मैं तुमको बताऊं, कल मेरे को बहुत गंदा लू लगा हुआ था, फीवर टाइप का, हाँ। अभी भी मेरे को फीवरिश टाइप का है, लेकिन हमको टॉपिक कंप्लीट करना था, समझे? हाँ। ऑल्टरनेट करने में अच्छा, लेकिन कभी कभी जैसे कोई चीज अगर कंटिन्यूटी में करना रहेगा तो मैं सेम डे नेक्स्ट डे रखूंगा। फॉर एग्जाम्पल
मल्टीवेरिएबल, हमको मन था कि मल्टीवेरिएबल रिग्रेशन और ग्रेडियंट डिसेंट में साथ में कराता डे आफ्टर डे, क्योंकि दोनों बहुत कोरिलेटेड है। तो चलो फिर ठीक है, आज का सेशन वाइंड अप करते हैं। कोई क्वेरी है किसी को? नंदिनी, श्रेया, आदि, शशांक, कोई क्वेरी? मेरे को अभी तो क्वेरी नहीं है, बट हाँ लाइक बीच में मेरे को जाना पड़ा था क्लास के, तो आई वुड सी अ रिकॉर्डेड वन एंड देन आई विल बी ऑनलाइन। हाँ देखो, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में ना, जैसे वो लाइब्रेरी फेच नहीं हो रहा था मेरे से, लेकिन जब मैं अपने से ट्राई किया था कल, तो मेरे से अच्छे से फेच हो गया था। अब यहाँ पे HTTP एरर आ रहा था, पता नहीं क्यों। मैं एक बार अपनी नोटबुक ऑफलाइन करके देखूंगा, अगर हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज इजी चीज है ये, कुछ ज्यादा इसमें वो नहीं है। तो should we wind up? No queries at all? यस, नो।